Can you hear me? आवाज सुन रही मेरी सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मली जो ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया था पॉजिटिव चार्ज Q is placed in front of a conducting solid Q at a distance d from its center. Find the electric field at the center of Q due to charges appearing on the surface. We are given that you have a cube and a charge Q is placed at a distance d from its center. So point charge Q is placed somewhere over here. We have to tell that इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये डिस्टेंस दिया डी। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज conducting solid cube. Now, when it is given that it's a conducting solid cube, means net electric field inside the conductor will always be zero. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी हो नहीं सकता। दो चार्जेस हैं, एक जो हमने चार्ज बाहर रखा, एंड सेकेंड द चार्जेस विच आर इंड्यूस्ड ऑन दिस क्यूब। किस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे इसके सरफेस पे। That means net electric field. When we say net electric field, means electric field due to external charge plus this should always be zero. This means that electric field due to induced charges is equal and opposite to electric field due to external charge. अगर ये external charge Q है at a distance d, यहाँ पे test charge रखा पॉजिटिव, तो ये प्लस Q इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, and electric field due to external charges KQ by d square. अगर मैं इसको मानता हूं, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाऊं, से एक्स एक्सिस है, तो दिस डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to induced charge is opposite of it. So it will be kq by d square minus I cap की जगह it will be plus I cap, because net electric field is always going to be zero. Clear है? So जो applied electric field होगा means electric field due to charge Q, induced charges का electric field भी उतना ही होगा और opposite direction में होगा, so that net field inside it always comes out to be zero. Next question is a pendulum bob of mass 50 milligram and carrying a charge of 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb is at rest in uniform electric field of 20 kilovolt per meter. Tension in the thread. हमें दिया pendulum bob of mass 80 milligram.
and a uniform horizontal electric field is applied. 20 kilovolt. It's 20 into 10 raised to power 3. Now we are given that it's having a positive charge. 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb. You have to tell that what will be the tension in the thread. तो टेंशन इन द थ्रेड कैसे निकालोगे? Because positive charge will experience force in the direction of electric field. Now, if positive charge experience force in the direction of electric field, we say that the pendulum will displace to a new position. Somewhere like this. Because इस पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स QE. एक फोर्स और जो लग रही है that is weight of the pendulum acting downwards. mg. Tension in the thread T. The two components of tension will be T cos theta and T sin theta. We have to find the tension and the strength. अगर हम equilibrium लें, for equilibrium condition is upward force should be equals to downward force. अगर हमें एंगल निकालना होता तो हम रेशो ले लेते कि t sin theta divided by t cos theta that gives you the ratio. But हमें टेंशन निकालनी है तो you can square and add the two equations. अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं t square sin square theta plus t square cos square theta and right hand side का square करोगे तो q square plus mg square. So t comes out to be this will be the tension in the string. Clear है? इसमें देखो कोई डाउट है तो just see if there is some doubt. Clear है सबको? Next is Yes. a particle of mass m and charge q is thrown against a uniform electric field E. How much distance will it travel before coming to rest? Now, when we are given that it's a uniform electric field, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल. फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन क्या है? F is equals to QE. So we say that अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, then you are given it is shown against uniform electric field. Shown against uniform electric field का मतलब है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगी.
पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगी F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एंड एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाय एम। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो यू कैन यूज द काइनेमैटिकल इक्वेशंस। हमने बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गया, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, because it stops for a moment. So final velocity is zero. Acceleration positive or negative? Because it's thrown against electric field, so it is retarding force. S is equals to V square minus U square by 2A. So zero. So let's say it stops after traveling a distance of mu square by 2QE. इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हो, ये तो काइनेमैटिक्स से किया, किसी और मेथड से। If I ask that whether the work done by electric field is positive or negative, work done by electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? अगर चार्ज पार्टिकल को मैं ले रहा हूँ कि इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यहां से शुरू हुआ से ए से, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस बी, और इसकी डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी एस। फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव बिकॉज इट वुड बी force into displacement into cos 180. There is an alternate method. Work energy theorem क्या है? Work done is equals to change in kinetic energy. तो हमने जितना वर्क डन किया उतनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बिकॉज वी इज जीरो, सो माइनस क्यू वी एस implies s is equals to, सो इस मैथड से भी कर सकते हो, दोनों मैथड से रिजल्ट सेम ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन। A particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10 to the power minus 4 coulomb. हमें मास दिया है 1 ग्राम, मीन्स 10 raised to power minus 3 kg. चार्ज गिवन है 2.5 into 10 raised to power minus 4, and it's released in electric field. Find the electric force and the force of gravity acting on the particle. पहला केस तो आसान है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस
QE goes to 0.5. This is the force. Then there's gravitational force. Gravitational force is mg. फिर बताना है in this force one force be neglected because इसको आप solve करोगे तो 2.4 into 1.2 this comes out to be 3 Newton. This is 1 by 100 Newton, so this can be neglected. They ask that whether one force can be neglected in comparison to the other. Can one force be neglected? Yes, you can neglect the gravitational force because it's small as compared to the electrostatic force. How long will the particle take to travel a distance of 40 centimeter? It's released from rest. Means u is equals to 0. It's released from rest. It has to travel a distance of 40 centimeter. 0.4 meter. How long will it take? U पता है, acceleration हमें पता है. Because gravitational force can be neglected. So acceleration is QE by m. S is equals to क्योंकि constant acceleration है तो you can use kinematical equations. U 0 है मतलब ये term 0 implies T is equals to root 2s by a and A is QE by m. So आपको सारी values पता है, S पता है, mass पता है, charge पता है, electric field पता है. You can find the time taken to travel 40 centimeter. What will be the speed after traveling this distance? You can use V is equals to U plus 80. U 0 है, acceleration is and time taken is 2s upon q by m. या तो ऐसे निकाल सकते हैं or you can also use second method can be v square is equals to u square plus 2s. तो u 0 है, v is equals to so you have all the values q, e, m, s सब given है. So you can find the speed. B part is how much is the work done by electric force? Work done by electric force because positive charge है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Positive. पॉजिटिव कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज क्यूई. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यूईएस. क्लियर है कि एफएस फॉर्मूला लगा दिया बिकॉज़ वर्क डन इज एफ डॉट एस or you can say fs cos 0 and f is qe. So QA into S. Ball of mass 100 gram
having charge 4.9 into 10 raised to the minus 6 is released from rest in a region in which horizontal electric force acts. Find the resultant force acting on the ball. What will be the path followed by the ball? Where will the ball end after 2 seconds? I mean, mass given है 100 gram or 0.1 kg. Charge given है और horizontal electric field given है. Means अगर मेरे पास एक चार्ज है इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है. Electric force is also horizontal and gravity acts vertical. QE and mg they are perpendicular. तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी? Find the resultant force. What will be the path followed? Path followed क्या होगा इस केस में? What will be the path followed? हमें दिया it's released from rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट से रिलीज होगी तो पाथ फॉलोड क्या होगा? पाथ फॉलोड. Straight अगर आप line. इन फोर्सेस को देखो QE मतलब 4.9 this comes out to be 9.8 into 10 raised to the minus 2 न्यूटन. mg कितना आ रहा है? Mass is 0.1 kg and g is 9.8. दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है. अगर दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है तो नेट फोर्स कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? नेट फोर्स Constant. नेट फोर्स कांस्टेंट होगी. अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है कोई भी बॉडी है जो रेस्ट से शुरू होती है और उस पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है तो पाथ फॉलोड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. मतलब अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से रिलीज करूंगा ना रेस्ट से तो वो ऐसे ही जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. सो वी से पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स. पाथ फॉलोड इज स्ट्रेट लाइन. अगर रेस्ट से शुरू ना होता तो इसमें तो रेस्ट दिया था. इफ द पार्टिकल डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो दो केस बन सकते हैं. आइदर इट्स इनिशियली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिधर फोर्स लग रही है अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा था पहले से तो पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन ही रहेगा. बट अगर इनिशियली फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी कोलिनियर नहीं है अब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे तो पाथ फॉलोड क्या होता है? इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉन कोलिनियर मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है एंड फोर्स इज कांस्टेंट then path followed will always be parabolic. समझ में आ रहा है? बिकॉज प्रोजेक्टाइल में अगर आपको याद है ग्रेविटेशन में पैराबोलिक पाथ क्यों आया था? बिकॉज कांस्टेंट फोर्स एक्स mg और वो वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं थी. हमने लिया था वेलोसिटी एंड ग्रेविटी दे मेक सम एंगल. सो इसमें भी यही कंसेप्ट है
कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होती, वो किसी एंगल पे मूव कर रहा होता, फोर्स ऑफ वेलोसिटी में कोई एंगल होता, then path followed is parabolic if force is constant. But if particle starts from rest in constant force x, then path followed is straight line. Clear है? Yes, sir. Next is a bob of simple pendulum has mass 40 gram charge given. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward is switched on. How much normally take to 20 oscillations? अगर सिंपल पेंडुलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वी से दैट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज दिस इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन और टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस. दिस इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. हमें दिया है इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड्स. तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया? 45 बाय 20 2.25. एक ऑसिलेशन का टाइम पता है. देन दे से दैट a vertical electric field is switched on. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसके साथ एक फोर्स लग रही थी mg डाउनवर्ड्स. Now when electric field is switched on, this bob will experience two forces. Gravitational force downwards and QE upwards. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी? नेट डाउनवर्ड फोर्सेस mg minus QE and acceleration is g minus QE by m. अगर एक्सेलरेशन g minus QE by m है तो टाइम पीरियड इज 2 pi under root L upon g minus QE by m. इस इक्वेशन से L निकल आएगा. L को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, QE एंड M हमें पता है तो यू कैन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड. मतलब इस इक्वेशन का यूज हमने करना है L की वैल्यू निकालने के लिए. बिकॉज L इज इक्वल्स टू GT स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. सो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन. इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड स्विच ऑन करते हैं तो then it would be फॉर्मूला क्या बनता? T is equals to 2 pi under root L upon G plus L QE by by M. H. Because जब माइनस QE by M की जगह प्लस QE by M हो जाता है if electric field is in downward direction. Clear है न्यूमेरिकल? Yes, sir. Next is a block of mass M and having charge Q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstretched spring of force constant K.
Horizontal electric field is switched on parallel to the spring. Find amplitude of resulting motion in SHL. हमें बताना है amplitude of oscillation क्या होगा? What will be the amplitude of oscillation? अगर हम vertical electric field switch on कर देंगे तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो electrical force is QE where because of this force the spring gets stretched. कब तक stretch होता रहेगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर मैं इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट्स इन द राइट डायरेक्शन. जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग में दैट विल बी, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? Opposite direction. हम लेंगे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. और हुक्स लॉ क्या था? कितनी होगी रीस्टोरिंग फोर्स? kx. जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेच नहीं हो सकता बिकॉज जैसे x था चेंज इन लेंथ, तो जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा kx की वैल्यू बढ़ती जाएगी. मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है? So this will be the amplitude of oscillation. QE by, sorry, QE by K. Clear है? So हमने बताना था maximum amplitude of oscillation कितना हो सकता है. Next is a block of mass n containing a positive charge is placed on a smooth table which terminates in a vertical wall as shown. Horizontal electric field is switched on. Elastic collisions है. Time period of resulting oscillatory motion. And will this motion be SHM? पहले तो यही बता दो ये SHM होगा या नहीं होगा. ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई इलेक्ट्रिक फोर्स. एसएचएम की कंडीशन होती है दैट फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाओगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल. इस पे Constant. फोर्स जो लगेगी दैट विल बी कांस्टेंट. इस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रही है मोशन विल नॉट बी सिंपल हमारे. as force acting is constant. Motion is not SHM. अब कैसी होगी मोशन? हमें कहा है कि it starts from rest. Now if it starts from rest, then u is equals to 0. Acceleration is QE by m. यहां से दीवार तक जाना है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज d. टाइम कितना लगेगा? बिकॉज s is equals to ut plus half ad square. a कांस्टेंट है तो इक्वेशन लग सकती है. u 0 है, ये टर्म 0, तो s is equal to half at square और t is 2s by 8. दीवार तक जाने का टाइम आ गया हमारे पास. 2d upon a is q event, मतलब 2md by q. फिर हमें कहा कोलिजन इलास्टिक है. इसने दीवार को स्ट्राइक किया आफ्टर टाइम किया फिर ये वापस इधर आना शुरू हुआ. अगर इलास्टिक कोलिजन है, जब ये इधर मूव करना शुरू करेगा तो इस पे फोर्स किधर लग रही है?
ऑपोजिट। जब वो इस पॉइंट से दीवार तक जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी और इसने दीवार को स्ट्राइक किया। वापस आया तो वेलोसिटी कम हो रही है और यहाँ पे आके दोबारा रुका। तो इधर से दीवार तक जाना और दीवार से वापस यहाँ तक आना, ये टाइम बताना। दैट्स ऑसिलेशन। एसएचएम नहीं है, ऑसिलेशन है। तो अगर इस पॉइंट से वॉल तक जाने में ये टाइम लगा तो वापस आने में भी सेम ही लगेगा क्योंकि फोर्स सेम है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज डबल ऑफ दिस टाइम, मतलब 2 अंडर रूट, और दिस विल बी √8 md/Q। कंसेप्ट देखो समझ में आ रहा है मैंने डबल क्यों किया? बिकॉज दो सिचुएशंस हैं। वो पहले यहां से वॉल तक गया, इधर वेलोसिटी 0 थी, इधर वेलोसिटी मान लो v थी, और फोर्स एक्ट कर रही थी QE/m इस डायरेक्शन में। फिर जब ये वॉल से वापस आ रहा है तो वेलोसिटी भी अगर जिससे स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से वापस भी आएगा, बिकॉज कोलिजन गिवन इज इलास्टिक। तो वेलोसिटी पता है और फोर्स इधर, और यहाँ पे आके फिर से रुक जाएगा। तो अगर 0 से v तक टाइम लग रहा है √2md/QE, तो v से 0 तक भी सेम टाइम ही लगेगा। क्लियर है ये? Yes, sir. 53 is given that a uniform electric field of 10 Newton per Coulomb exists in vertically downward direction. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, that it's in downward direction. हमने A से B तक जाना है, 50 सेंटीमीटर। हमने बताना है पोटेंशियल कितनी बढ़ेगी। बेसिकली ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्या था? इट इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है। तो अगर ए से बी जाना है, हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग गया नीचे, तो अप्लाइड फोर्स विल बी अपवर्ड। यूनिट चार्ज है तो फोर्स इज इक्वल्स टू ई, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एफ डी कॉस 0। ऊपर जाना, ऊपर ही फोर्स लगानी पड़ेगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इंटू दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट। क्लियर है ये? सो इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम Yes. करते हैं, बिकॉज डेली आज नहीं, एक दिन छोड़ के क्या करेंगे, एंड विल डू से परसों दोबारा करेंगे 54 से आगे, 54 के आगे जो क्वेश्चंस होंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो मेरे को क्लास से पहले आके पूछ लेना।